Hi, welcome to our channel. You can be the change. And in our series of family and beyond and looking at our health, I have today with me a wonderful guest, Geetika Grover. She's been practicing, she's a practicing dietitian, which she's been practicing for 12 plus years now. She has done her dietitian course from she's from Punjab University, Chandigarh, and she's been transforming lives. A lot of people that I know of have been benefited from her diet regime, and kind of she is the person who kind of believes in that, kitchen holds the best for you when it comes to diet. She's been very instrumental in transforming lives for people and also reversing diabetes, thyroid disorders, and other chronic diseases. And she's also been very instrumental into working towards weight management as well as therapeutic dietetics as well. So thank you so much, Gitika. I know you so far long, but thank you so much for being on our channel and graciously agreeing on giving our subscribers and our listeners a lot of tips that will help them to manage their diet. In today's world, weight management, I think, is a big issue, as well as chronic diseases like everybody is having diabetes, thyroid, or any other diseases. So I think a lot of people gonna benefit from your inputs here. So thank you so much. And if I missed on something that I you should also be telling our listeners, please go ahead and just introduce yourself. Thank you so much, Sugandha, for the wonderful introduction. I'm, I'm honestly overwhelmed and so grateful to be here today. It's always been a passion to help people heal and feel their best through simple and home cooked food. That's I've been doing since years, and I love my work. Thank you for having me, and I'm so excited to hopefully inspire everyone listening here to get a healthier, happier lifestyle. Let's get started here. Yeah, of course. Yeah, thank you so much. So what I will start with initially is understanding from you what really a good diet or a balanced diet should be. We talk about balanced diet a lot, but if you can tell us what really a balanced diet should be. See, Sugandha, balanced diet, as we all know, it is a diet जो हमारी mothers since ages हमें देती आ रही है. जब हम स्कूल से आते थे तो हमें घर में एक दाल, एक सब्जी, एक चपाती या दो चपाती डिपेंडिंग कि हमें कितनी भूख लगी है, और उसके बाद हमें फ्रूट, दही एंड सैलेड वो सब मिलता. Our Indian food is completely a balanced diet. So, variety of different foods in the right amount to maintain your holistic health and a disease-free life is called a balanced diet. To eat good amount of proteins, carbohydrates, fats, and vitamins and minerals, and of course water, fluid, in a right amount is known as balanced diet. ये हम सब शुरू से खाते हुए चले आ रहे हैं. Good diet always plays an important role in maintaining your physical and mental well-being. These days, not only physical well-being, but mental well-being is also associated with your gut health. So, gut health आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे कि gut health होनी चाहिए अच्छी, gut health अच्छी होनी चाहिए. किस लिए होनी चाहिए? जब हम सुनते हैं मेरे को यार ब्रेन फॉग हो रहा है, आज मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज कि आपका जो गट है वो क्लीनर नहीं है, तो आपको मैसेज जो है ब्रेन पे वो क्लियर नहीं जा पा रहा है. सो गुड डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ. आजकल जो मेजर कंसर्न्स हैं जैसे कि थेरेपेटिक डाइट्स वगैरह आजकल चल रही हैं, वो किस लिए इतनी इंट्रोड्यूस हो गई हैं? क्योंकि छोटी सी एज में आपने देखा होगा छोटे छोटे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी है ना. एज रिलेटेड कोई भी फैक्टर नहीं रह गया है. Be it, it starts with your BP, heart diseases, your cancer, then your diabetes, then आजकल girls में या women में PCOS, PCODs, thyroid, lifestyle diseases, arthritis, anemia, etc. कितनी बीमारियां जो हैं वो थ्रू फॉल्टी फूड्स होने लग गई हैं. सो अगर हम दोबारा से अपना जो डाइट है वो ठीक कर लेते हैं, बैलेंस डाइट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स खाते हैं, होम कुक फूड्स खाते हैं, तो आई एम श्योर, प्रीटी श्योर ये सब चीजें हमारी पहले की तरह कम हो जाएंगी
जो कि हम अब डाइटिशियंस फूड के थ्रू कम करवाते हैं. सो दिस इज आवर वर्क, दिस इज माय वर्क, दिस इज हाउ आई हेल्प पीपल. सो जितने भी आजकल आप देखते होंगे कि लोगों को कितना स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर है, right, उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, खाना ठीक से नहीं खा पाते. राइट सुगंधा? right. Yeah, है ना? तो हम लोग खा नहीं पाते, तो हमें क्या होता है, जल्दी जल्दी हमें निकलना है, तो हम लोग खुद भी या बच्चे आजकल जितनी भी यंगर जनरेशन आ रही है, यंग एडल्ट्स हैं, उनके ऊपर इतना टारगेट मीटिंग का अपना इतना प्रेशर है उनके ऊपर. दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर से उठ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, दे कीप देयर डब्बाज विद इट. है ना? right, मठरी रख ली, देन दे गेट बेकरी प्रोडक्ट्स, देन दे ईट, कंफर्ट ईटिंग शुरू कर देते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इमोशनल ईटिंग. right, जो कि हमें लगता है कि खाना ही हमारा है उस टाइम, जो फूड हमें जो कंफर्ट दे रहा है वो हमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता. right, right, सो जो भी कुछ हमारे हाथ आता है, शुगरी ड्रिंक्स हाथ में आती हैं, या हमें बिस्किट्स हाथ में आ गए, या हमें नमकीन हाथ में आ गए, दैट टू ऑल फ्राइड फूड्स हाथ में आ गए, तो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम्स हाथ में आ गए, बट हम उसको क्या करते हैं, वी गॉबल देम. yeah, फटाफट खाया, पेट भर गया, सुकून मिल गया, और उससे क्या होता है, ऑल द ट्रांस फैट, दे आपके टमी एरिया पे एज विसरल फैट, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, जिनसे ये हमें सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, थायराइड है, शुगर है, इवन बड़ी बड़ी बीमारियां भी लेटर ऑन स्टेज में, ये सब चीजें हमें हो रही है. mhm, सो अगर हम अपना डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, तो इन सब चीजों से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, टाइमली अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीजों को. जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है इन सब चीजों का, दैट इज योर फॉल्टी फूड. mhm, फर्स्ट थिंग, यू गेट ओबीज, और ओबेसिटी से ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. कितने स्ट्रोक्स आ रहे हैं आजकल, छोटी छोटी एज में आ रहे हैं बच्चों को, right, यंग एडल्ट्स को आ रहे हैं, 35-40, अभी कितने लोगों की डेथ हो गई है. इट इज ऑल ड्यू टू फॉल्टी फूड्स. सो आई सजेस्ट कि अपना जो फूड है वो हम अगर अच्छा रखें, और उसके लिए हमें 3 मेजर चीजें चाहिए होती हैं along with your home cooked clean food, organic food, that is to add in omega 3, probiotics and antioxidants to your diet. अगर हम ये सब चीजें ऐड करते हैं तो बहुत हद तक हम ये सब चीजें, ये बीमारियां अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं. जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन फूड हैं या हमारे साउथ इंडियन फूड हैं, दे आर ऑल बैलेंस डाइट्स. बट mhm, इतना टाइम आजकल किसी के पास है नहीं. right, है ना right, सुगंधा? right, right, आप तो यूएस में रहते हैं, तो आपको तो यू आर वेरी वेल अवेयर yeah, ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि इतना yeah, टाइम नहीं होता. yeah, सो आजकल जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, दे आर वर्किंग, इतना प्रेशर है, या तो वो खाते ही नहीं है या ऑर्डर कर लेते हैं बाहर right, से. yeah, yeah, अच्छी सब लोगों को, दे आर गिविंग देम गुड Zomatos and Swiggies a yeah, good job. So yeah, here I would like to suggest few good healthy options to people who are working, कि वो कैसे अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और वो एक ही उसमें बैलेंस मील कैसे खा सकते हैं. कई बार होता है कि हमारा नहीं मन होता प्रॉपर रोटी बनाने का, नहीं बना सकते, चपाती नहीं बना सकते हम, दाल चावल नहीं खा सकते, वो पांचों चीजें जो हमारी मदर रख के हमें देती थी विद सर्विंग ऑफ फ्रूट, वो हम नहीं कर सकते. किसी टाइम हम फ्रूट खा रहे हैं, किसी टाइम हम खाना खा रहे हैं, किसी टाइम हम पराठा ही खा लिया. right, सो आई एम सजेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम आवर नॉर्मल इंडियन फूड, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड, उसके अलावा क्विक मील्स थोड़े से हमारे हो सकते हैं, जो कि हम एक दिन पहले भी अगर प्रेफर बना के रख लें तो इजीली हम लोग उसको खा सकते हैं. correct, सो correct, कीनुआ आई वुड लाइक टू सजेस्ट इस सेशन में. कीनुआ जो है वो हम उसको एज सैलेड खा सकते हैं. वी कैन ऐड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एवोकाडोज टू इट, दैट इज अ हेल्दी फैट. right, हम उसको ऐड कर सकते हैं. अगेन कीनुआ बॉइल्ड होता है और बहुत टेस्टी लगता है, उसके सैलेड्स बने हुए. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसके अंदर आप कुछ भी नॉन वेज, आप मीट है, चिकन है, वट आप उसके अंदर श्रेड करके डाल सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेक इट टेस्टी. mhm, देन अगेन रैप्स इज वन थिंग कि आप अपना होल व्हीट का रैप बना के आप खा सकते हैं. चिकपी रैप बना सकते हैं. और चिकपीज हमारा सफेद चना, right, right, तो सफेद चना जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसका हम हमस भी बना सकते हैं. correct, right, ठीक है, तो हमस को हम खाकरा के साथ खा सकते हैं. सो चिकपी रैप्स हो गए. अगेन नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आप उसमें क्या करोगे. वन थिंग इज बरीतो बोल.
उसमें तो आप कुछ मर्जी ऐड कर लो, लाइक यू कैन add beans to it, you add rice to it, you Yeah. can add all the salsas and all, घर पे बना के जो भी हम कर सकते हैं, vegetables आप ऐड करो. then tacos है, it is all roasted, it is baked, आप उसको बना के, this is also an Indian, this is also a healthy option कि आप उसको कर सकते हो. then biryani and pulaus all made up of brown rice, उसके अंदर आप n number of vegetables डालो, आप bell peppers डालो, आप mushrooms डालो, you can add anything to it. Theplas, again, Yeah. Right. very rich in nutrients. और oats है ही, आप कभी भी oats, आप milk oats खा सकते हो, आप vegetable oat खा सकते हो. इसे, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो और आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की वो इंटैक्ट रहेगी, Yeah. एंड ऑल योर न्यूट्रिशन desired by your body is fulfilled. Okay. This is what is, in simple words, a Mhm. balanced diet. Okay, so now coming to and this was very helpful, Geetika. But then talking about, today in today's world, people do confuse weight loss and then to your like how should I say? There are so many diet plans, roaming around on the social media. It's be keto or something, or something else here and there. Like people try to associate diet plans or dieting with the weight loss, right? How are they associated? And is it like right to think about that when you're thinking about dieting, it's usually for weight loss only, or you can do weight loss by maintaining balanced diet also? See, we give diet plans maintaining your balanced diet only. Right. So what we basically plan is that your food should inculcate, ample amount of fruits, ample amount of grains, ample amount of proteins, as well as fats. Mhm. One plan that will work for me will not work for you. Mhm. Makes exactly. Everybody's needs are different. Right. So whatever will work for me, according to my body, according to my health issues, according to my weight, will not work for you. Right. Right. Right? Right. So all these diets that you are finding on, social media and all, they will till some extent can work till some extent कि 1-2 किलो कम हो गया and you are happy with that. Yeah. But उसके बाद then what? Stagnant हो जाएगा weight, है ना? Right. So Right. I would suggest कि आप proper meal लेके, balanced diet लेके, जिसमें आपका fruits हो. Again, like I've told you the shortcuts of all the balanced meals. Yeah. तो Yeah. हम वो कर सकते हैं. Like smoothies is one kind of, Yeah. a shortcut to a balanced meal. कि Yeah. आप उसमें frozen fruit आपने डाल लिया, berries डाल ली, which are very good antioxidants. Right. तो हम इस तरह की डाइट देते हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका जो डाइट है वो भी पूरा बैलेंस हो जाए. Right. Right. So, if I come to the other point is, and you were bringing up a very good point of work from home, right? Now, work from home is also leading to people sitting long hours on their own, like, in their workstations. And there is less of, I would say, body movement as compared. And I feel with a proper balanced diet, there needs to be a proper, if not like, either people are doing too much of exercises, and we are hearing a lot of people having heart attacks on treadmills and all that stuff, or they are doing nothing at all, right? So there has to be a balance. So how, as a dietitian, you suggest that what should be a minimum exercise, or what activities that a person should do? See, if you are a sedentary worker, Yeah. like you sit at home, you work. Hmm. So, the formula everybody is nowadays talking, everybody is a dietitian these days. Mhm. So, so they say 80% of diet and 20% of your workout. So Correct. that is correct. Mhm. Whatever you eat, Mhm. that shows. So 80% of your diet and 20% of your workout. Right. That workout, it doesn't mean that you have to work out very hard. You have to hit gym. आपके लिए वो वॉक भी काम करेगा, आपके लिए वो योगा भी काम करेगा. आप आधा घंटा आप वॉक करो, आधा घंटा आप योगा करो. मेंटेनिंग ऑप्टिमम फूड का जो आपका है, वो आप अपना नॉर्मल पोर्शन कंट्रोल करके. Right. Right. डू नॉट बिंज, डू नॉट ईट लेस. Yeah. जितना आपको भूख है बट उसको कंज्यूम करो, क्योंकि आप सारा टाइम बैठे हुए हो, सेडेंटरी वर्कर हो. और अगर इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर,
Then you need to have, extra amount of proteins, कि Mm-hmm. नहीं तो मसल मास जो है वो आपका गेन नहीं होगा. Right. और इन सब चीजों के लिए that time only you need to have extra calories or extra proteins Okay. for the body. Okay, so now I'll just take a little bit of we're talking about adults, we're talking about grown-ups here. But I think the nutritional needs of a newborn, right? And especially for the first 1,000 days, or I would say, first few like years is very important because I think that's the laying foundation. So how and at the same time, the same nutrition is needed for the mother also, Right. so how do you suggest like what should be taken care of during those first few years of the child and the mother who's just given birth to the child? See, Sugandha, both of them, they need special care during this period, as these are the foundation years. Yeah. 35% of the children are malnourished, they're stunted. And the mothers, they are anemic as well. So, अगर mother health ठीक नहीं होगी, तो बच्चे की health तो अपने आप ही ठीक नहीं होगी. True. Right? So, I try to give them iron-rich food and calcium-rich diets. To mothers, I suggest to take vitamin D as well. क्योंकि अगर मदर ठीक होगी, मदर एक्टिव होगी, तो बच्चा अपने आप ठीक रहेगा. सो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि फॉलेट ऐड हो, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐड हो, either through diet or through fortification during your early 1,000 days that you are talking about. उस चीज में मैं अगर fortification भी करना पड़ता है तो वो करना चाहिए उसको. सिमिलरली सुपर फूड्स में इधर न्यू मॉम्स के लिए बताना चाहूंगी, लाइक दलिया, दूध वाला दलिया जो होता है, मिल्क दलिया, porridge, वो बहुत रिच होता है. देन सूजी, सूजी इज ऑल्सो वेरी रिच फूड, उसको भी अगर हम न्यू मदर को देते हैं. और दाल, सर्विंग ऑफ दाल, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, घी, मेथी दाना, फेनुग्रीक, और शतावरी. Then along with it, I would suggest her to take tulsi, amla, turmeric, ajwain, moringa, which is rich in fibers, और जो gut clean रखेगा. Also nuts and seeds. These are few things जो हमारी old age चली आ रही है, सारी चीजें, और हमारी मदर से भी हमें दी है या हम देते हैं आगे. और फॉर बेबी ऑल्सो 6 months तक तो मदर्स फीड रहता है, उसके बाद वीनिंग पीरियड शुरू होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि मैश्ड लेंटिल्स हो, प्योरेड वेजिटेबल्स हो, एग योक हो, बॉइल्ड वेजीज हो, उसमें हल्का सा बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, खिचड़ी है, कर्ड है, porridge है. So it should, promote his early growth years. Okay. Now, again, I'll just keep on going from one age factor to another. Now, this is about the first 1,000 years of a child and a mother. Talking about 40 plus women, right, who are going through a lot of body changes, there's menopause hitting, and then there's a lot of things hitting to the women. Right. How do they maintain their diet during that period? And or would not say just a diet, but how do they maintain a healthy lifestyle that helps them go through these bodily changes? See, this is the busiest time of one's life, women's life. Yeah. हाँ? घर के भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है, बाहर भी जाना है, आउटिंग्स भी करनी है, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं. सो दिस इज द बिजिएस्ट टाइम ऑफ वंस लाइफ. ठीक है. तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं और अपनी केयर नहीं कर पाती वे. ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसमें अपना स्ट्रेस मैनेज करके चलना. स्लेप, जो हम लोग का अपना स्ट्रेस है वो मैनेज करना है, वेट मैनेज करना है अपने. हमें अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं, कैल्शियम्स है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, अगर ये सब चीजें हमें लेने की जरूरत है तो हमें वो लेनी है. देन वी हैव टू प्रायोरिटाइज अ स्लीप. स्लीप जो है दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल. राइट. अगर हम रात को ठीक से सोएंगे नहीं तो परेशान रहते हैं. पोषण कंट्रोल करके चलना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है. शुगर, सॉल्ट एंड फैट्स, उनका इंटेक हमें लिमिट करके चलना है. और कैल्शियम रिच फूड, विटामिन डी रिच फूड का ध्यान रखना है, क्योंकि इस एज में
40+ में बोन डेंसिटी और मसल मास जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। Right. और यू नो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा वजन तुम पे अच्छा लगता है, वो गुलजार की एक शायरी आई थी, तो इस पीरियड में ये सब भी होने लगता है कि Mm. आप ना चाहते हुए यू टेंड टू गेन वेट ड्यू टू Yeah. योर हार्मोनल इश्यूज। Right. सो ये सब चीजें आप अपना डाइट से ध्यान रखिए, और Mm. अपना जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो टाइम से लीजिए। True, right. Okay. And so, I mean, you said it right. And I think especially Asian women, and we've seen our mothers and all, we tend to keep our health at the last priority, though we are the nurturers of the family, right? I mean, we are the ones who are giving food, making sure we are giving balanced diet to the kids. But we tend to, keep our health, our stuff at the end, back end. Usually what we do is कि अच्छा ठीक है, कई कितनी बार होता है कि okay, there's no, like, we we'll just eat whatever is left over, or we and especially mothers, kids leave the food in the plate, and then of course not trying to waste it, they'll just eat it. And I've heard a lot of my friends saying that I'm putting on weight because I'm just eating my kids left over and all. How do you see that? Like, how as a women we should inculcate in ourselves that um, there are things that we have to take priority as a women for us as well. Then only we'll be able to support our family too. See, if you love yourself, you take care of yourself. First thing is that love yourself. Mhm. और ये तो रहेगा ही हमेशा। बच्चे का प्यार, क्या बच्चे का प्यार तो रहेगा, साथ में बचना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए घर में। सो Right. आई वुड सजेस्ट कि इसको थोड़ा सा हम ये हैबिट अपनी चेंज करें। Mhm. रादर हम उसको थोड़ा सा लाइक लाइफ में हमारे जो है चेंजेस आए हैं, और एज के साथ साथ जो है हमें हमारे जो फीमेल्स हैं उनको स्पेशल न्यूट्रिशन की जरूरत है। Mhm. सो अपने लिए अगर हम थोड़ा सा करें, लाइक वी शुड ऐड स्प्राउट्स टू आवर डाइट, Mhm. millets to our diet, Mhm. and we reduce our caffeine intake, tannin intake। भूख नहीं लग, मतलब भूख तो लग रही है हाँ, पर खाना नहीं खा पा रहे हैं तो चाय पी लेते हैं, हाँ, right, यू right. नो। Yeah. इंस्टेड ऐड हर्बल टीज, उसमें तुलसी डालिए, उसमें सिनेमन डालिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे बॉडी से। यू कैन ऑल्सो ऐड अश्वगंधा, गिलोय, लेमन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो Right, मैं कहती हूँ अगर एक लेमन नहीं तो आधा लेमन तो दिन में जरूर लेना चाहिए फॉर इम्यूनिटी एंड एनर्जी। right, right. और सत्तू आजकल है, तो सत्तू भी इट इज इट प्रोवाइड्स यू प्रोटीन। यू कैन Mhm. ऐड बटर मिल्क टू इट, यू कैन ऐड वाटर टू इट, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। प्रोबायोटिक्स लीजिए Mhm. and maintain your hormones. So Mhm. you have to prioritize yourself कैसे भी करके। Right, अभी वो टाइम तो चला गया, बट क्या है कि आजकल बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एजेस में, बहुत अर्ली एज में आपको बीमारियां लग जाती हैं। right, right. सो वो तो हमें बच्चे वाला प्यार करेंगे, बट छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। Right. Yeah, exactly. So now, I think the now we have our parents also, right, Gitika, who are now aging parents and all, right? I mean, of course, nutritional needs are there, but as you suggested, activities. I mean, after you're getting 70 plus, you're not able to walk that much, you're not Right. able to do that much activity. And then when we see our parents like having those like age issues and all, like how one as a child I can make sure that my parents are in this age also are getting the proper nutrition, and how those people themselves also do few things that can help them kind of maneuver through that age. See, like first thing is like try giving them fresh meals। हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चों को भी होता है कि चलो सुबह का ट्राई मेकिंग फ्रेश मील्स, Right, सॉफ्ट एंड स्मॉल मील्स। वो इतना एपेटाइट उनका नहीं बचता क्योंकि डाइजेशन वीकन्स, right, तो वो इतना एपेटाइट उनका नहीं बचता कि वो एक रोटी दो रोटी खा पाए। जो right, उनको अच्छा लगता है, गिव देम सॉफ्ट स्मॉल मील्स। ऐड घी राइस में, उनके देसी घी, दैट विल हेल्प देम। बॉवल मूवमेंट्स एंड ऑल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड एज में, right, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। सो ऐड घी टू देयर राइस और देयर लेंटिल्स, और ग्रीन वेजिटेबल्स उनको देनी चाहिए, सॉफ्ट फूड।
थोड़ी सी मशी right, सॉफ्ट फूड उनको देना चाहिए, फिर च्यूइंग की प्रॉब्लम हो जाती है। फाइबर रिच फूड हमें कोशिश करना चाहिए, वी शुड ट्राई गिविंग देम टर्मरिक मिल्क विद अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इनटू इट। okay, मशरूम्स हैं, उसमें mm, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन डी हम दे सकते हैं इस तरह से। right, और लाइट कुक्ड, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको हम सूप की फॉर्म में या स्टू की फॉर्म में हम उसको लाइटली कुक्ड होम चिकन भी दे सकते हैं। देन त्रिफला इज वन थिंग, त्रिफला हम उनको दे सकते हैं, उससे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी त्रिफला से। और गार्लिक कोशिश करें कि उनके फूड में ऐड करें, uh-huh. तो उससे ये सब चीज़ों से उनके लाइक वी कैन टेक केयर। Yeah, okay. All right. So I think we did touch upon a newborn, we touched upon a middle life, like, and especially women, and then we touched upon the senior citizens. As a dietitian, when do you see in all the stages of life, when do you see we meet the most need of a proper diet and seek a dietitian, in that sense? See, I think childhood to adolescence is the age Mhm. where we need, you need to have maximum calories, proteins, and other essential nutrients. Right. At this point in time, we need to have calorie dense proper food, Mhm. you know, Mhm. with fluid, water, stay hydrated, fluid in the form of milk, lassi, your water intake, your fruit juices, I'm not talking about cold drinks and all. So, Yeah. healthy foods. So, with this, you need to eat mindful. Mhm. है ना? इस Mhm. टाइम क्या होता है कि बच्चों को बहुत चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बाहर की चीजें, और मन भी बहुत करता है, कहते हैं एज भी यही होती है खाने की। Right. बट Right. देन ईट माइंडफुली, ऐसा नहीं है Ah, कि आप बाहर जंक नहीं खाओगे या बाहर आप फास्ट फूड नहीं खाओगे। true. यू लव टू ईट, Yeah. है ना? Yeah. बट देन ईट माइंडफुली कि आप क्या खा रहे हो और उसको कैसे हम उसको और अच्छा करके या और हेल्दी फॉर्म में हम खा सकते हैं। वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स एट दैट एज, वी Mhm. शुड रिप्लेस इट विद बेक्ड और रोस्टेड फूड्स, है ना? Mhm. We can add glutens to it like spinach or corn. Mhm. These are things we can add to their food. Then, roasted makhanas, tofu, lentils, legumes. इतना उनको देना चाहिए अच्छे से इन द फॉर्म ऑफ सैलेड्स और दाल्स कि उनको क्रेविंग ना हो। Right. Right. दे शुड लव द फूड। Mhm. अब उसके लिए मदर को इनोवेटिव होना पड़ेगा कि वो क्या बना के कैसे दे। Correct. तो इस बच्चे के सामने तो आप ऐसे रख दोगे तो वो नहीं खाएगा, बट Right. उसकी क्रेविंग्स खत्म करने के लिए या बिंजिंग की खत्म करने के लिए और उसका आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए आपको उसको ये सब चीजें देनी पड़ती है। एंड दिस इज द एज वेयर मैक्सिमम न्यूट्रिशन इज नीडेड। Uh-huh. Okay. Yeah. Okay. So I think I can keep going on and on and on. This is a topic I think we can just keep on talking about. But as a dietitian, I mean, you've given a lot of advices, but as general advices for like age agnostic, what as a dietitian you would want to give advice to our listeners and the people whoever people will be listening from or benefiting from this podcast? See, as I said, you know, proper food, proper sleep, and proper exercise. Uh-huh. These are the three keywords Right. that I would like to suggest, and I do suggest to my clients. And eat well, Mhm. your skin glows. Yeah. What you eat, it reflects your skin. Right. So eat well. Uh-huh. Awesome. Thank you so much. And if in case anybody wants to reach out to you seeking Right. some dietitian help and all, how can someone reach out to you? See, they can DM me on my Insta handle. Okay. That is dietitian Gitika Ruber. Okay. Or if you want to pin my number, I can give it to you. So if people would want to reach out, we can put on your Insta handle and they can reach out to you through the Insta handle. So Right. I think that's for our listeners that if you would want to reach out to Gitika and seek some dietitian advices, as I told you, right? I mean, she's done wonders in this area. She's been a great. I know her personally, so I know how many people she's changed lives of and.
she's passionate. She's passionate about what work she does. She's passionate about knowing, making sure that the people eat right and people are kind of taking care of their health. So if you would want to reach out to her, Insta handle would be in the description, as well as I'll just put it on this channel as well. But thank you so much for gracing our channel and talking to us. And also, we did talk about balanced diet, but I think there are a few more things that I would want to talk to you about. But then maybe, that's when I reach out to you asking for much more details about few of, like, maybe how to reverse diabetes or how to reverse thyroid, and Sure, Sugandha, even I would love to have you again with us. So, Of course. Thank you so much. And to our listeners, please do listen in. If you have any comments, in any suggestions, please do let us know. If you have any questions for Gitika, you can put it on our channel, and I'll make sure that those comments go back to Gitika and she can answer those questions. And if you, as I said, if you would want to reach out to her, we'll share her Insta handle. Keep listening in, keep subscribing, keep commenting. Thank you so much. Your love keeps us growing. So thank you so much for everything. And thank you, Geeta Didi, again for sharing your details with us. thank you, Sugandha. It was a wonderful session, wonderful interacting. I felt really nice interacting with you. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ share कर पाई अपनी knowledge आपके साथ. Pleasure is ours. Thank you so much.